हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। अब हम करेंगे प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिसिटी क्वेश्चन 7 पेपर 2 5054। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन 7। A student has three resistors. Each resistor is labeled 3.9 ohms और उसकी पावर रेटिंग है 3 watts. She checks the values of the resistance of the one of the resistors. In space below, draw a circuit diagram of a circuit that she can use to find the resistance. Include a battery, a variable resistor, a voltmeter, and an ammeter in the circuit. So basically, I have already made this circuit. So this is how it will look like. इसके अंदर एक ammeter है, एक voltmeter है, एक variable resistor है और battery है एक. So very simple question. 2 मार्क्स का क्वेश्चन है. So let's move on. आप इसको एक दफा सर्वे कर लें. When the circuit is turned on, the potential difference PD across the resistor is 4.2 volts and the current in the resistor is 1.2 amperes. Calculate the resistance of the resistor. So we have to calculate the resistance. We can easily apply the formula. V is equals to IR यूज कर लेते हैं हम लोग. V हमारे पास क्या होगा इस केस में 4.2 और I हमारे पास 1.2 है into R which is the resistance. We have to calculate 1.2 divided by 4.2 divided by 1.2 will give us an answer of 3.5. 3.5 ohms will be the resistance. As simple as that. ठीक है ना. अच्छा आगे देख लेते हैं. Shortly after the circuit is turned on, the resistor overheats and gives off smoke. जब सर्किट चलता है the resistor overheats, गर्म हो जाता है and it gives off smoke, धुआं निकलने लग जाता है उस resistor में से. Explain why it overheats. Include a calculation in your answer. So basically, previously they have told us that the power rating of the resistor is 3 watts. That is why I highlighted it earlier because I knew this was gonna come. So इसका जो power rating है that is 3 watts and the power in the resistor is as we calculate P is equals to VI use कर लेते हैं. Calculate the power और power will be equals to voltage हमारे पास 4.2 है into I which is 1.2. So 4.2 into 1.2 will give us an answer of 5.04 watts. So as you can see power rating से ज्यादा है. That is why it is producing a smoke. So basically the calculation of power as we know, as we calculated is 5.04 watts or 5.6 watts. Maximum voltage as and maximum current. So the power is too large and according to the power rating, it is too large, right? So it will give off smoke and it will be irregular. ठीक है ना. सो आप किसी भी मतलब पावर रेटिंग वाली चीज में कोई भी पावर नहीं घुसेड़ सकते. यू हैव टू डू इट अकॉर्डिंगली टू द पावर रेटिंग. अगर 3 वॉट्स की पावर रेटिंग है तो इट मस्ट बी 3 और लेस. सो लेट्स मूव ऑन. द अदर टू रेजिस्टर्स आर आल्सो लेबल्ड 3.9 ohms and 3 watts. The first resistor is now removed and the student connects these two resistors in series to the PD 4.2 volts. State and explain whether these resistors overheat. So we have to do the same thing again, right? हमने फिर से करना है. हमने इसकी फिर से वॉट्स निकालने हैं. हमने फिर से पावर निकालनी है of the resistors connected in series. I think yeah, series. So first of all, जो दो resistors होंगे they will have a combined resistance of 3.9 plus 3.9 which is 7.8. So that will be the combined resistance. So now 7.8 as the combined resistance आ गई. And now let's calculate what the current is. Current will be calculated using the formula V is equals to IR. हमारे पास voltage कितनी है 4.2. हमारे पास I कितना है निकालने वाला है और हमारे पास R कितना है 7 point something 7.8. So 4.2 divided by 7.8 will give us the current which is 0.54 कर लेते हैं 0.54 amps. ठीक है ना. करंट हो गया हमारे पास. तो हमारे पास करंट भी आ गया, हमारे पास रेजिस्टेंस भी आ गई है.
Now, which formula do we use? We use the formula of power is equals to current square I square into R. So 0.54 square, एक second, 0.54 square into R which is 7.8. ठीक है ना? तो let's see what the answer is. 0.54 square into 7.8. What will we get? 2.27 watts. ठीक है ना? 2.27 watts आ गया हमारे पास आंसर. लेट्स चेक. 2.27 वॉट्स और इन्होंने बोला है कि 1.13 वॉट्स ई चाहिए. तो इफ यू डिवाइड दैट बाय 2 व्हाट विल वी गेट? 1.13 वॉट्स फॉर ईच ऑफ द रेजिस्टर्स. सो हमने निकाल लिया इसका रेजिस्टेंस. सो नो, सो या इट विल नॉट ओवरहीट. सो दैट इज द एक्सप्लेन्ड वर्जन. मैं सारी कैलकुलेशंस कर दी हैं. यू कैन गो थ्रू देम योरसेल्फ. अगर आपने इंडिविजुअल का निकालना है, अगर आपने इंडिविजुअल रेजिस्टर्स का निकालना है, यू कैन वेरी इजीली डू दैट एज वेल. 0.54 square into 3.9, so you'll get 1.13 as given in the mark scheme. But मैंने दोनों का एक साथ निकाल लिया, which is below the power rating, so it will not overheat. So that is going to be it for this video. I hope you enjoyed. Have a great day. Allah Hafiz.